Pahalgam. Why I'm making this point? Because if you do this forensic, this common sense forensic, you see that what happened also in Pahalgam. Moving forward, very recently, the Jafar Express, same account. Keep your eyes on Pakistan today and tomorrow. And then comes big Jafar Express train carrying Pakistani forces personnel from Quetta to Peshawar attack. The same accounts that are active carrying the narrative of the Islamist terrorists, Pakistan being responsible on play over here. Let's see, if we want to understand what happened at Pahalgam, that what are the people there in India and Kashmir seeing. Let's see what they are seeing, who are actually over there. 10 लाख से ज्यादा यहाँ पर आर्मी है। पोस्ट कोई शेयर करेगा उसको रात में ही उठा लेंगे। अगर कोई पोस्ट गलत करेगा कोई शेयर, अगर यहाँ पर इतना फौज है वो क्या करे, वो जख्म मारे। वहाँ पर 200 बंदे थे, तब वहाँ पर क्यों नहीं आर्मी थी, क्यों नहीं थी, वो कहाँ गई? पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी 27 लोगों की जान गई, वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, क्यों निकाल गई? तो तुम्हारा इंटेलिजेंस का वो फेलियर नहीं है, इस सरकार का फेलियर नहीं है। ये प्लान करके मत करो। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, हमें कुछ पता ही नहीं। नाकों पर आप हर जगह आपको पुलिस दिखेगी, सीआरपीएफ दिखेगी। किस लिए? बॉर्डर पे है, फंसाए, जहां तक पहुंचे हैं तो वापस कहां गए? इस तरीके से किसी नहीं हो सकता है। अगर 7 लाख से 12 लाख के आसपास यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस है, उसके बावजूद उनको ये पता नहीं इंटेलिजेंस फेलियर। 3 टायर सिक्योरिटी रहते हुए भी एक इंसान लैप्स हुआ। सिक्योरिटी है। What happened to our intelligence? Have we failed somewhere? And if we have, why have we? इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। यहाँ 7 लाख फौजी है जमा कश्मीर में। एक छोटा सा इलाका है, 7 लाख फौजी है, वो कहाँ है? वहाँ पे गाड़ी नहीं जा रही है, पैदल इंसान जा रहा है। सिक्योरिटी इतनी है कि वहाँ से कहाँ से टेररिस्ट कहाँ से आ गए? वहाँ कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस से अटैक करवाती है। The questions that the Honorable Deputy Prime Minister has raised, they are being echoed also within, because the facts are there for the people to see. Hear them out. ये पुलवामा 2 है। पुलवामा 1 में कोई उत्तर नहीं मिला देशवासियों। ये संयुक्त प्रयोग है पूरी देश की जनता। मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी देश की। देखिए, काफी लोगों को नहीं पता है कि पहलगांव कहाँ है, चंदनवाड़ी कहाँ है, विष्णु टॉप कहाँ है, गणेश टॉप कहाँ है, शेषनाग कहाँ है, अमरनाथ क्या? आज 3 दिन हो गए हैं, अभी तक एक भी इस्तीफा क्यों नहीं आया, या कोई भी किसी ने भी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लिया? आप क्या सरकार और क्या डिफेंस और क्या आप होम मिनिस्ट्री चला रहे हैं? आपसे अभी तक आतंकवादी पकड़े तक नहीं गए। बेवकूफ नहीं है हम लोगों को सब समझ आता है। कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद अटैक हो गया। लेकिन एक घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहाँ ढूंढते फिरोगे भाई? जो आपके बीच में यही घूम रहे हो, या कोई कश्मीर के लोग अपने यहाँ पे घटना करके आबाद होंगे? This is the sister of the naval officer killed in the incident. That for 1.5 hours bleeding. So they could fight, they can do the evaluation within 10 minutes that what happened, and they filed an FIR against Pakistan. Within minutes, their social media is saying bleeding for 1.5 hours. इसका मतलब ये चुप नहीं है, वाली चीज की आहट होने वाली है। जैसे एक साइलेंस होता है ना कुछ होने से पहले, कश्मीर में उसी तरह। देश में अब तक के सारे बड़े आतंकी हमले भाजपा की सरकार में हुए हैं, और भाजपा की सरकार आते ही देश और देशवासी सभी खतरे में आ जाते हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही सरकारी कवियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वीर रस की कविताएं पढ़ना शुरू कर चुके हैं। देश के गृह मंत्री ने अपना इस्तीफा क्यों नहीं लिखा, और प्रधानमंत्री को हमले के तुरंत बाद आतंकियों को धमकाने के लिए बिहार में रैली करने की क्या जरूरत पड़ गई? जम्मू कश्मीर के पहलगाम के निकट जाने वाले बैसन घाटी में आतंकी हमला हुआ। डॉक्टर इन बड़ी शांतियां है, सरहद पर चुनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? So these questions that we are raising
that we are thinking, that the world is thinking, the most loud voice, in fact, is coming inside from India. The people who are seeing and watching what's happening. Now, if you go to the next slide, is it first time that it's happening? No. There is a litany of using terror incidents for political. This is important, that these have an objective, a political objective. Time, in case of Pulwama, that how the terror incident in February was used for a political objective for change of status of Kashmir. And we are seeing now that a terror incident, that an incident that happened in Pahalgam is being used for the purpose of water treatment, for distracting the Pakistan's continuous and very hardly fought one war on the terrorism, the CT effort of Pakistan, and the efforts, the successful efforts. And there is a list of these incidents. I'll just give you examples of 2 incidents. If you go on the next slide, so the history speaks for itself, that what happened in the Chhattis Singhpura 2000, exactly 25 years ago. रात ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਕੋਲ ਲਾਪੜ ਖੜੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਚ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸੌਂਦੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਲਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ and then one night ਆਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੇ ਲਈ ਨਿਕਲਾਓ ਬਾਹਰ ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਓ ਮੇਲ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਉਹ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਲਾਈਨ ਅਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅੱਧੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 10 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਿ ਪਛਾ ਕੇ ਆਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ we gave the full report. He said army was involved. Clinton kicked them out. And to me, all lives have been lost. I want to know exactly all the human rights organization, United Nations said. And we sent them the report. Yeah. They knew. Medals do. So there was killing of political reasons basically? No. Only this. The ex-BJP government and BJP government wanted to tell Clinton JK की हो रहा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना ये देखो पाकिस्तान की कर रहे हैं पाकिस्तानी साढ़े 6 लाइन अप करके मार दे so basically BJP planted this to impress Clinton to help India against Pakistan ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ देखो जल्दी से जिससे कन्विंस हो जाए भी इन्होंने किया था वो पकड़ लो किसी को इन्होंने 5 इनोसेंट बंदे कश्मीरी भारतीय ऊपर जाके जाके मारते जी they were innocent boys. Are you listening? After a quarter of a century, a book being repeated again and again, using incidents Chhattis Singhpura like for political objectives. If you see, the history also tells us what was actually Pulwama. Please listen carefully to the then governor of the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे ये करेंगे वो करेंगे उसको इलेक्शन के लिए यूज करना चाहते थे कि ये पाकिस्तान ने किया हमारे जवान मारे और अब हम हराएंगे कि अब ये सारा ऑनर्स पाकिस्तान की तरफ लाना तो चुप रहिए मतलब एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट हेल्प आवर इलेक्शन Blame Pakistan
to win elections. Now, there is another important fact that needs to be considered in the situation that the region is facing today, and that is the phenomenon of the fake encounters using the illegally held Pakistani prisoners in India. We have the reports, we have the information that hundreds of Pakistanis being held by the Indians in different jails and locations are used and fake encounters projected as terrorists and infiltrators. I'll give you just few examples. This boy, Zia Mustafa, he was a minor in October 2013. He was taken in custody while he inadvertently crossed, shot down in a fake encounter on 14th October 2021. Listen to this story as told by his family. ये जो इंडिया वाले हैं, मैं कहती हूँ इनको तो इनके सीनों में दिल है ही नहीं ना। इनके सीनों में अगर दिल होता ना तो ये कुछ ना करते। इतना अर्सा उन्होंने कैद में रख के तो आखिर में जब उनका फैसला होना था तो उन्होंने उनको एनकाउंटर कर दिया और इन्होंने हमें उनकी ना डेड बॉडी दी। पाला भी था वो, मेरे घर में भी नीचे आता था, मामी मामी करता था, इधर ही बाहर ही खेलता था। माँ ने बहुत मुश्किल दिन गुजारे, उनकी आंखें नजर भी चली गई थी रो रो के। तो बस जब कोई इधर कोई आता था उनको मिलने के लिए कहते ज़िया मुस्तफा की कोई खबर है नहीं है, हम यही कहते थे कि वो आएगा, इंशाल्लाह जरूर आएगा। कहती थी कि मैं देख के मर जाऊं तो फिर कोई अफसोस नहीं है। मेरी वालिदा मोहतरमा उसके इंतजार में वो वफात पा गई और इसी तरह से हमारे बड़े भाई, दो बड़े भाई फौत हुए उसकी इंतजार में। हमारा वो प्यारा बच्चा वो इस तरह से मार दिया, जेल से बाहर निकल के ऐसे फंसी ना, उसको पता नहीं कौन सी जंगलात का पता था, उसको क्या पता था जालिमो तुम्हारे वो जेल में है, जेल से कैसे कोई बंदा राब्ता कर सकता है। I will now give you two very recent examples post Pahalgam incident. If you see this slide, there you can see two unfortunate Kashmiri. One is Muhammad Farooq and Muhammad Deen. They are both elderly. They were both elderly 50 years ago, 50 years plus. Just a few days ago on 24th April, in their residence of, and they were killed in a fake encounter by the Indians. If you see the dead bodies, the Indians showed that they are infiltrators. The Muhammad Farooq, he is wearing joggers. His clothes are absolutely clean. And what they have put beside, after killing him, beside him is a pistol. Is this the infiltrator where there is infested with regular forces going to take on a regular army, and those forces wearing joggers still that they planted along with his body? On the other side, look at the shoes. He's wearing Mukesh and shining shoes. You kill innocent, you plant evidence on them, and then you call them infiltrators? And what are these village people telling? That are they terrorists? Are they infiltrators? Listen to them. हमारा यहाँ समझा हो गया है, ये दो हमारे भाई ये सदी से जा रहे थे, इनका बाप है यहाँ के कई मौलवी बेशी गुम हो जाता है, एलओसी के करीब उनको ढूंढने के लिए ये इंडिया आर्मी ने शहीद कर दिए, वो मार कर कहते हैं कि ये दहशतगर्दी में दहशतगर्द ये नहीं है। हमारे दो भाई इंडियन आर्मी ने इनको शहीद कर दिया है। वो गाँव के ज़ईफ़ उम्र थे, उनकी 50-60 साल उम्र थी, तो उन्होंने डाल दिया कि ये पाकिस्तान के दहशतगर्द थे, दहशतगर्द ज़ईफ़ उम्र थे। एक का नाम मलिक फारूक और दूसरे का नाम मुहम्मद। ये कोई दहशतगर्दी में नहीं पाए जाते हैं कि अरसा दराज से यहाँ रहते हैं, इंडियन आर्मी ने फायर करके उनको हला कर दिया। मेरे दो भाई अपना माल मवेशी ढूंढने के लिए एलओसी लाइन के करीब गए तो इंडियन आर्मी वालों ने फायर करके दोनों को शहीद कर दिया। This is what they are trying to fabricate even after post Pahalgam, that the Pakistan is sending infiltrators and terrorists. You kill innocent people.
yourself. You plant weapons, and then you claim them as infiltrators, you claim them that the Pakistani security forces have sent them. Ask yourself that who is doing state-sponsored terrorism over here. Next example. This is 23rd April, just few days ago. A fake encounter that happened in Kupwara. Please hold your breath and see what hunting once they are making their bodies, how they mutilate those bodies. Listen to this. These are soldiers of a professional army hacking the head of a body of an innocent person and showing that these are the terrorists. This happened on 23rd of April in Kupwara. And that's why, if you go to the next slide, once you keep on seeing on the Indian media and the so-called evidence that this person has been found and this person has been found, from where are these persons coming? These are these Pakistani citizens, Kashmiri citizens, who are held in different jails, in different locations, like that poor boy Zia Mustafa and many other incidents that are on record, who are brought out of the jails, killed in fake encounters, tortured, forced to give confessional statements, posed as terrorists. This is the facts, this is the reality of what's going on behind all these incidents. Next, I would like to say few words and take a few minutes on the state-sponsored, the Indian-sponsored and abetted terrorism in Pakistan. Let's start with what the Indians themselves say about it. Please listen. बलूचिस्तान के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, उस आदर करते हैं वो मेरे 700 करोड़ देशवासियों का। Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. प्रधानमंत्री जी का लाल किले से बयान अपने आप में पहला है और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बयान को सुनकर। मंगल कौन से सरदार का नंबर चाहिए मुझे बोलो, मैं दूंगा बलोचिस्तान में। अगर हम पाकिस्तान के अंदर उनकी जो इंसरेक्शनिस्ट मूवमेंट्स, Former Chief of Indian Army talking. हमें करना चाहिए। उन्होंने बलूची को दबा के और गुलाम बना के रखे, तो उनको मुक्त करना है। The aims and the target to conduct the various terrorist Kulbhushan Yadav, all of you are familiar with this Indian serving officer. and elements of them are conveyed back to their officials. मुमालिक के फंड्स लेकर अपनी ऐश वशरत की जिंदगी कर रहे थे, आम मासूम बलोचों को मरवा रहे हैं। इस समस्त साजिशों में खासकर इंडिया का हाथ है। मेरा मुलाकात हमसाया मुल्क की हुआ, हम आपको सपोर्ट करेंगे रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तकिम होने के लिए। महसूस करते हैं प्रेशर ग्रुप के तौर पर सवाल करना चाहते हैं। समझता हूँ कि इसका नुकसान से बलूच कौम का हो रहा है, लेकिन नजरें तो हैं इस पे, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। So these were the leaders of terrorist groups operating in Balochistan, who are having after surrender revealing in detail that how they were funded, they were helped, and how they were sponsored by India. In the next slide, see a terrorist operating and sponsored by India, Aslam Achukian Hospital, and an Indian provided passport of Afghanistan office. In next slide, you can see that once the Jafar Express happened, the internationally recognized terrorist organization DLA
spokesperson, where was he sitting? He was sitting in channels, wearing a mask, coming on multiple Indian channels, and glorification of a terrorist act, which, by the way, is stay any concern or condemned so far. And they are glorifying it, taking spokesperson over here. बहुत बड़े पैमाने की कॉपरेशन हो यार हमारी है, फिर उसमें फौजी भी है, बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड्स को लीड कर रही है, उसके जो खफी दस्ते हैं स्पेशल. This is again very interesting. This footage that the Indian TV channels showed was made by the terrorists. Actually the Jafar Express was blown. So this was only available with terrorists. And who are the first electronic channels who started showing it? It's the Indian channels. See it. That act took place at around 1 p.m. when the train passed. Big news coming in from Pakistan. Baloch Army say that more than 100 Pakistani Army personnel in hostage. It's a big claim by the BLA. 6 soldiers. Pakistan Army have been neutralized. Artificial intelligence images being created. Pakistani train was hit by old images which are not related to the incident being used to show the terror incident has been. So this is vehement, clear glorification being done in Pakistan. If you move to the next slide, you'll find that not long was Pakistan, as repeatedly has been telling this, and this is the evidence that Pakistan put in front in this room on Indian sponsored and abetted terrorism, the transnational killings of Pakistanis. Listen to this clip also. We have evidence of the links between Indian agents and the assassination of common nationals on Pakistan. So these are killings for hire cases. Indian agents use technical and safe havens on foreign soil to commit assassinations in Pakistan. An Indian agent, Yogesh Kumar, orchestrated the documentary, financial and forensic evidence of the involvement of the 2 Indian agents who masterminded these assassinations. And is it only restricted to Pakistan? No, it's not. It's transnational. Listen to what the other parts of the other countries are saying. Actively pursuing credible allegations of potentially agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it's completely unacceptable. This is something we take very seriously. A number of us have raised this directly with the Indian government. If the BJP is actively plotting to kill political opponents in Canada, just imagine what's happening in India itself. So once we say that we have got nothing to do with Pahalgam, and once we say the only way out is the independent credibility, we have strong reasons, empirical evidence and facts on of which we are seeing. Now, if you come to the next slide, if you remember that once the National Council issued this declaration on 24th April, it clearly said that Indian attempts to inject volatility in the environment along Pakistan's eastern border is aimed at distracting Pakistan terrorism efforts. On night 25th, 26th, within 48 to 72 hours, its manifestation, the largest scale of fitna al-Khawarij terrorists, was taken down. 71 were sent to hell. These from the Indians. The largest scale was launched, and alhamdulillah,
the Pakistan security forces and the intelligence agencies being vigilant took them down. Because we have credible intelligence that Indians post Pahalgam have tasked all their proxies to terrorist acts everywhere in Pakistan, whether these proxies are operating in Balochistan and along the other parts of Pakistan. One of the clear evidence of these proxies and these cells I presented in detail yesterday. Just to refresh your minds, I am going to request you to listen to just one audio of a serving major of the Indian Army talking with a terrorist who he is handling inside Pakistan. Please listen to this. बात आप एकदम दुरुस्त बात बोल रहे हैं, बट अब तक से तो हम लोग भी नहीं है जी, और पहला काम हो भी नहीं रहा है, ठीक है ना? ठीक। बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है ना? तो मैं अगर पैसा आपको भेज रहा हूँ, इसलिए नहीं भेज रहा हूँ कि मेरा बंदा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। आप कभी डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसा नहीं लेंगे, पहली चीज। आपके लिए भी क्या कहते हैं, मैं डायरेक्शन डेटिंग लेंगे 10,000 रुपए यहाँ के मैं आपको इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि मुझको पता है कि कितने अमाउंट को डालने से ISI या आपके यहाँ की एजेंसी या आपकी साइबर विंग हो गई, ठीक है ना, या आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गई आपकी, वो उस चीज को मद्देनजर नहीं लेगी। समझ गया, ठीक है ना? जब आप बड़ा ऑपरेशन करेंगे, और मैं लाखों की बात कर रहा हूँ, जब आपको 3-4 लाख रुपए भेजे जाएंगे यहाँ से, तो आप लड़कों में क्या होता है, एक ऑपरेशन करने के बाद वो पागल हो जाते हैं। मैं आप इस तरफ की बात कर रहा हूँ। उनको लगता है जी सामने वाला बंदा पैसा देने के मूड में नहीं है। जी नहीं, सामने वाला बंदा पैसा देगा, बट आपको वो टुकड़े टुकड़े में करके देगा। मेरे लिए बहुत आसान है, मैं भी कमीशन देता हूँ किसी बंदे को देने के लिए, जो वहां पे बैठा हुआ है, जो अपनी रिस्क पे लिए आपको भेज रहा है पैसा, उसको भी तो मैं दूंगा ना भाई। मेरा क्लाइंट तो है नहीं वो, या घर वाला तो मेरा है नहीं, वो भी मेरा दोस्त ही है, तो मेरा ताना तो मैं दूंगा ही दूंगा ना भाई। उसकी भी तो लेबर लग रही है। मेरे को सेफ रखना है तो मेरे लिए आसानी है कि मैं एक बार में दे दूं, मेरा काम, मेरे पैसे बच जाएंगे। बट मैं आप लोगों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उसको 2-3-4 हिस्सों में बांट करके आपको देता हूँ, अकाउंट में नहीं, अलग अलग अकाउंट के अंदर। हम फ्यूचर में भी जब आप ऑपरेशन देंगे तो मैं आपको पैसे दूंगा। तो इस तरीके से जब चलेंगे आप पेशेंटली, तो हम लंबा चलेंगे। देखिए, मैं 1-2 दिन के लिए नहीं हूँ यहाँ पे, मैं आने वाले काफी सालों के लिए यहाँ पे हूँ। एक ही ऑपरेशन के साथ आपका मेरा साथ और काम खत्म हो जाएगा। हम ऐसा करें कि आप भी बोले कि हाँ अभी किसी बंदे। So what all we are showing you here, that independent, transparent, neutral, credible investigators, if they see this, this is what they need to see. This all is verifiable. This all is there for to see. It can be forensically checked that there is this serving Indian major, and this is few days ago. And if you listen carefully, what is he saying? He is saying we are operating a terror network from Lahore to Balochistan. He is saying we are here for years and we are going to be here for years. He is saying money is no problem. If this small terror cell, that one-man cell, he is offering him millions and giving him millions. Just imagine how many billions are they ready and are they paying to Fitna al-Khawarij and the terrorist organizations operating in Balochistan as their proxy. Just imagine that how much money is being paid over there. And is it not a clear, vivid example of what actually terror financing means? This is for the world to see. This is for the world to check. Against all this terrorism that is sponsored and abetted by the Indians in Pakistan, because of it, if you go to the next slide, you will see the figures. Since January 24, Pakistan has suffered 3,700 terror incidents. And you talk to us about
your incidents that are happening without any evidence, and you put those incidents blame on Pakistan. There is verifiable evidence that there are 3,700 incidents of terror that are happening over here. We have shown you a few parts of that how is it happening, who is sponsoring them, who is glorifying them, who is abetting them. In these incidents, the people of Pakistan has suffered 3,896 casualties. There are 1,314 shaheeds, civilians, law enforcement. There are 2,582 injured. And against this, your law enforcement, your security forces, intelligence, armed forces are waging 192 operations per day. We have killed more 1,666 terrorists. This is the terrorism that has been abetted and sponsored by India. It's for the whole world to see, they feel it, its effects. And here we must be cognizant that Pakistan is the last bulwark that is standing against this scourge of terrorism, of this creeping, perverted ideology, which is getting its notion of victory somewhere else. And it's the Pakistan, the people of Pakistan, its armed forces, its law enforcement, which is standing as the last bulwark, not only for the sake of Pakistan and its people, but for the sake of the whole global, what sort of disaster consequences it will have for the whole world. And India, for its short-term, myopic objectives, is facilitating this terrorism. It's abetting this perverted, creeping ideology. Why? For its short-term political objectives. So this is important to understand. Now, a few words about the oppression that is going on with the Muslims and in Kashmiris. We're not going to talk about what's been happening for last more than 70 years. I'm just going to show you what's happening since Pahalgam. Please watch this. That how the houses, please run this. That how the houses are being bulldozed, blasted. There are more than 50 houses in Kashmir alone have been bulldozed and blasted on flimsy charges of being affiliated or being part of the Pahalgam. More than 2,000 people have been taken into custody. Thousands are being harassed. This is what's happening right now. Request you to go to the next slide. Now, I talked earlier that there is a planned and choreographed campaign of Islamist terrorism, but the facts speak differently. This is what some sane people are saying, that the tourists who came in taxis belonging to Muslims, they stayed in hotels owned by Muslims, they ate food
cooked by Muslims. They rode ponies owned by Muslims. They did tracking guided by Muslims. When terrorists started their attack, they were covered and protected by Muslims. The first person to die defending was a Muslim. And you heard his brother. Did you not hear his brother? The first person who died protecting those tourists. You kindly next slide पे रहें. And so I'm trying to make you understand that what the saner people over there, they are saying they were the first come who came to help for Muslims, the pony owners, the riders, the pillowback riders. First aid and rescue was done by Muslims. Ambulances were driven by Muslims. They were treated in hospitals by Muslim doctors and nurses. And everywhere on social media, we see that all Muslims are terrorists. So this is the orchestrated narrative that is being played. Now see this Muslim MLA, please now run this, who raised his voice against this Muslim discrimination. বোমা বিস্ফোরিত হৈছিল আৰু 6 বছৰ আগতে পুলৱামাত যিদিনা 300 কেজি আৰডিএক্সৰ বিস্ফোৰণত প্ৰায় 42 জন ভাৰতৰ সিআৰপিএফ জোৱান নিহত হৈছিল সেইদিনাই মই কৈছিলো যে ইয়াত চৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে আৰু ভাৰতবৰ্ষত এটা সাম্প্ৰদায়িক মেৰু বিভাজন কৰি 2019 লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰত পুলৱামা বিস্ফোৰণ হৈছিল আৰু সেইদিনাই মই কৈছিলো আৰু নিৰপেক্ষ তদন্ত বিচাৰিছিলো. Aminul Islam, MLA of the All India United Democratic Front, has been arrested by the Assam Police Crime Branch after his highly controversial and also offensive remarks alleging the involvement of the centre in the recent attack on tourists in Pahalgam. In fact, he also called Pulwama a conspiracy by the Indian government. So if you speak otherwise, go to jail, even if you are an MLA. And what's happening to the Muslims and Kashmiris? Please run this. हमने तो काम स्टार्ट कर दिया अपना गांव में। भाई हम काट डालने गए, दो पकड़ेंगे दोनों मार काट डालने गए भाई। दो कटुए मारे गए, छतरी गोरक्षा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है और भारत माता की सौगंध 26 का बदला से ना लिया तो मैं भारत माता का पुत्र नहीं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। Just see dogs and Muslims not allowed. Where did you see this? राय मंदिर पे काम जो कर रहे हो तुम, अभी जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसमें हिंदुओं को देख देख के मारा गया है, पहचान करके। इसीलिए हम तुमसे इस काम से तुम्हें हटा रहे हैं। हम काम नहीं कर रहे हैं हम मंदिर पे तुम्हें, इसीलिए तुम्हारा बहिष्कार कर रहे हैं कि तुम लोग जो है पूरा इस्लाम जो है हमारे हिंदू सनातन को टारगेट बना रहा है और हिंदुओं को देख देख के मार रहा है। And I just said earlier also that terrorism has no religion. There are no Muslim terrorists, there are no Christian terrorists, there are no even Hindu terrorists. So why an effort is being made to label the whole community, the Muslims, as terrorists? Is this part of some agenda? Is this part of that hate that systematically is being put in a society? That saffronization that is trying to be done, whose manifestation you saw that the Muslims and dogs not allowed, and where did we see that the world conscious and the world memory remembers those posters, and also that what ensued after that, the genocide and the suffering that ensued after that. So the irrationality that you see playing and the rational minds grapple to understand, it stems from somewhere perhaps over here. Lastly, those who are trying to tell within the India that there is something wrong, that something is amiss, what's happening there? Please listen to this. अगर यहाँ पर This is 24th April, a Kashmiri journalist.
पहलगाम तक जाते जाते मुझे 10 चेक पॉइंट्स पे रोका जाता है, मच्छी साथ नहीं ले सकता मैं। ये बंदे आए कहां से? डोंट आस्क कश्मीरीज ऑन दिस, आस्क द सिक्योरिटी एजेंसीज। कितनी कंपनीज है यहाँ, आरआर है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है, आर्मी है, बीएसएफ है, वो क्या जग मार रहे थे? गवर्नमेंट क्या कर रही थी? मैं जिनसे ये क्या कर रहा हूं? होम मिनिस्टर साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, ये क्यों हुआ? And what happened next day to this gentleman, this journalist? He is being forced in, and nobody knows where he is now. In last clip, that what's happening, to say your and put your voices on social media. अपहरण कांड 1999, This is a social media influencer. 1999 पर आतंकी हमला 2001, अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला 2002, अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला और 2017, गोधरा कांड 2002, पठानकोट आतंकी हमला 2016, उरी आतंकी हमला 2016, पुलवामा आतंकी हमला 2019, पहलगाम आतंकी हमला। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर, लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। So she is just pointing out common facts that all these incidents are happening in once the BJP government is in power. She's trying to just connect the dots, and there you go, and the big hand of the law comes. And what they are trying to do for the voices that are coming from outside the world, if you go to the next slide, what's happening outside? They have blocked all digital YouTube, digital news channels of Pakistan, so that the voice of Pakistan of fact and reason, explaining what's happening, what are the actual facts, doesn't go to its citizens. They are blocking all websites, X handles, other handles who are talking about facts. This is what's right now happening on hourly basis. Why they are stifling it? Because they are afraid of truth. They don't want to face the reality. Lastly, I would just say that this tells us something very important, that what the Indians are trying to do is that there is a process of internalization of their external problems and externalization of their internal problems. Kashmir is an external problem, and they are internalizing it. Terrorism, extremism is an internal problem of India. Instead of handling it, instead of addressing it, they are externalizing it. This cycle is manifesting itself also in this Pahalgam incident. Thank you very much. We'll open the floor for questions. You moderate, Professor, with your permission. Yeah, please. The floor is open. Ms. Mona. Mona Khan from Independent Urdu. My question is from DGISPR. Sir, what response and options are available to Pakistan in wake of your yesterday press briefing? Please. We are monitoring the situation very carefully in all, and accordingly our responses and countermeasures in all domains are ready. And as you must have seen in the declaration of the National Security Council, the statement of the government of Pakistan that came last night also, that there will be decisive and assured actions. I will not go into the details, but rest assured, the people
people of Pakistan, with its full resolve, will defend the territorial integrity and sovereignty of Pakistan at all cost. I'll just add to what Lieutenant General Sharif said, that Pakistan will exercise restraint for the purpose of regional peace, but, and that is very clear, if provoked, and any action from the other side will be responded in a emphatic manner and in a stronger way. Thank you. Aga Ikrar sir. Sir, my question, thank you so much, Aga Ikrar from DND News Agency. My question to DGISPR. Sir, yesterday and even today, you have very, with the facts and figures and with audios, you shared how Indian Army, not intelligence agency, the Indian Army is involved in cross-border terrorism in Pakistan. What next now? For how long Pakistan would face this situation when the Indian Army is directly involved, paying people with the documentation? You have shared everything. So what would be next now? Well, the nation, the resolve of the leadership is in front of you. National Security Committee press release, we covered every point. We discussed in totality. And I must compliment all political parties who represent in the federating units, all federating units in the Senate of Pakistan, which is a symbol of federation. There is the unanimous resolution, including, I'm repeating, all political parties. And I think the message was loud and clear that in terms of for sovereignty or territorial integrity, there is no compromise. And we are one, united, and with clear resolve that if anything, any provocation takes place, then, don't blame us. And this is the message we have given while, communicating with world leaders in the last few days. Thank you. And Ms. Sumera, just to add with reference to the evidence that we talked, this evidence is credible, it is verifiable for any transparent, independent inquiry by any investigators. And Pakistan will take up this case, is taking up and will continue to take up this case of this state-sponsored and abetted terrorism with all forums, including the international community. Thank you very much, spokesperson. This is Sumera Khan from Sama Television. Sir, I have a two-pronged question. One is from the respected DG and the other is Deputy Prime Minister and Foreign Minister. DG, if we talk about kinetic measures, we are right now engaged significantly eastern border and western border as well. So the terrorist might be thinking, terrorist who's operating right now significantly from across the border, if you talk about Afghanistan, I'm forced to name this country as well right now. So what is our situation? Are we stretching our army at two borders? What's our strategy to deal with this two-pronged kinetic strategy? And Foreign Minister, I'm seeing you discussing the entire situation with a lot of world leaders, and you have been day in, day out, you are speaking to them. But to my shock and wonder, I did not see any statement from any country that is condemning that India is not presenting substantial evidence of Pahalgam attack. And yes, they are offering their condolences to the victims, we do, but where is the demand for evidence from India, and what forums exactly we are seeking to put up this question? And as DG has highlighted, that state-sponsored terrorism from India, what exactly we are going to do about it? Thank you so much. I'll answer the second half. Pakistan Army and Pakistan Armed Forces and law enforcement, we are a battle-hardened army. So, it may be a ploy, it may be a tactic, it may be a desire, a strategy for them to engage militarily on the eastern front so as to create space along the western border. But Pakistan Armed Forces, its law enforcement, intelligence, security agencies are fully capable of taking all these threats simultaneously with full force and effectivity. And its manifestation you just have seen in the last few days. As I told you that we have credible intelligence
and that all the proxies of terror have been activated. But the security of the people is being done. The terrorists are being hunted and being taken down. So we are vigilant, we are watching everywhere. And I said earlier that we are watching their moves and what they are doing and their plans in all domains. So whether they are in the domain of counter-terrorism, non-kinetic, information operations, other domains, air, ground, sea, everywhere, and appropriate countermeasures are being taken, are in place, and there will be defeating and decisive responses. The second question, you see the action of the diplomatic world is always incident specific. The incident is Pahalgam, so that would be out of context what you expect, that while they are not condemning India, obviously they are condemning the terrorism, everybody, but I don't know whether you have seen the Chinese statement, whether you have seen the Tayyip Erdogan, the president of Turkey statement, and I explained earlier that most of the global leaders, they were very, very candid and requested to exercise restraint, and that's why we have announced that we will not be the first one to take any escalatory move. So the policy of the government is absolutely clear, and that's what we are following. So surely this will be inappropriate, I think, at this stage. They haven't seen all this evidence, number one. The discussion right now is focused on an incident. So, it would be out of context if somebody goes out of the way and starts condemning why you're not dealing with all these things. So this is for your education to sharing with the media, with the nation, with the international community, that's what Jan Saab and spokesperson have tried to just run you through. Thank you. Khalid sir. खालिद महमूद जी एक्सप्रेस टीवी से। जनरल साहब, एक टेक्निकल सा सवाल है कि जो दोनों मुल्क के दरमियान साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में जो कंपैरिजन है, पाकिस्तान वहाँ पे कहाँ खड़ा है? और दूसरा मेरा सवाल है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इंडियन मीडिया जो है वो अभी से जो लास्ट ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करने की बातें कर रहा है। क्या ऐसा कोई मुमकिन है या ऐसा कोई खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान भी वो लास्ट ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता है? Let me, before General Saab adds on, as for the warfare comparison is concerned, I think the conventional warfare comparison is over on 28th of May 1998. You are a nuclear power and so is India. Again, at that time, we were not the first one. They, exploded 5 devices. There was a lot of, offers from the world leaders, including President Clinton and many others. And Pakistan leadership, Mr. Muhammad Nawaz Sharif was the Prime Minister of Pakistan. We accompanied on 28th of May in NDC, where General Jagir Kramal gave a briefing. But you asked comparative warfare. So the decision was we have to go and respond to represent the sentiments of the nation as well. So number one, so you are a nuclear power and you are recognized as a missile power as well. So no worries at all. Warfare is very much there, but when you say last option, if you are referring to the nuclear option, so obviously there is a national command authority in place in Pakistan, like all the countries who are nuclear, and it is their domain that in such eventuality that national command authority would meet, where again Prime Minister and the leadership of Prime Minister Shahbaz Sharif, the both the civil and military leadership who are the members of that command authority under the law of the land, they will sit and decide. Ji, ma'am, want to add something? On these particular domains that in which the comparison, I think this is not the forum to discuss that in cyber domain, electronic warfare domain, in the firepower domain, in the information domain, in the other domains, we start doing a comparison of 2-3 countries and powers at this time. I think this is not the forum right now. I gave you an overarching response that we are watching them very carefully in all the domains and all the appropriate measures are in place. The response, as the Honorable Deputy Prime Minister said, will be befitting, it will be decisive and assured.
नौरीन सुनो न्यूज़ से डार साहब से दो क्वेश्चन हैं। सबसे पहले तो ये कि गुज़िश्ता रोज़ DGISPR की जानिब से ब्रीफिंग में बड़े वाज़ेह शवाहिद पेश किए, ये साबित करते हैं कि किस तरह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। तो क्या पाकिस्तान मुख्तलिफ सफारतकारों को बुलाकर और बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर कोई डोजियर देने की तैयारी कर रहा है? और सेकेंडली ये सर कि क्या अभी तक अमेरिका, चीन या किसी भी दोस्त मुल्क की जानिब से दोनों ममालिक के दरमियान तनाव की जो हालिया कैफियत है इसको कम करने के लिए कोई पेशकश की गई है? थैंक यू। जहाँ तक डोजेस का सवाल है, एज आई सेड दैट वी आर एक्टिवली इन्वॉल्व विद द डिप्लोमेटिक कम्युनिटी। दे वर गिवन ब्रीफिंग इन मोफा by the Foreign Secretary to begin with, who were present in Islamabad. We are actively engaged with different high commissioners, ambassadors, chargé d'affaires. Even today, a US chargé d'affaires called on me. So we are actively engaged on this thing 24/7. Number two, the वाज़ेह शवाहिद जो आपने बात की देखें, let me remind you, all this thing what you have seen, if I can quote Madeleine Albright book, the introductory remarks were by President Clinton. Now, what did he say? And it's not a recent episode, it's decades old. In that book, it is written that quoting President Clinton, he said he had the intel information that if he goes to India, there will be around 36 will be killed, murdered. And he responded that if I had gone, I had taken that information and not gone, then perhaps these 6 could have survived. But if I had not gone, I would not have discharged my responsibility as PUTUS, President of the United States of America. So it's not me who's saying, it's Madeleine Albright's book. The person she's quoting has written the introductory remarks in that book. So this is, you see, and the actions are totally, unacceptable. Even in 1971 war, Indus Water Treaty was kept in place and was followed. Never before, since this 23rd announcement, never before. And there's no provision or possibility in the international legal dictionary the word abeyance in any treaty. So they can suspend it, but there's no provision of suspension. Thank you. Mateen sir. जी थैंक यू सो मच। डीजी मतीन हैदर, DGISPR से सवाल है। आज हमें आपकी तरफ से अपडेट्स मुसलसल मिल रहे हैं और एक अपडेट ये है कि पाक फ़ौज ने अपनी जो रेगुलर मशकें वो शुरू कर दी है। एयरफोर्स ने ऑलरेडी शुरू की हुई है। रात के हमें वज़ीर इत्तलात का भी स्टेटमेंट मिला जिसमें यह कहा गया कि अगले 36 घंटे भारत की जानिब से हमले के लिए इंतहाई अहम हैं। आपसे स्पेसिफिकली ये पूछना है कि कितना बड़ा ख़तरा है, हमारी कौन सी जगहें पाकिस्तान में, क्या लाइन ऑफ कंट्रोल, आज़ाद कश्मीर, भावलपुर, किन जगहों पे ख़तरा ज़्यादा है और उस ख़तरे से निपटने के लिए हमारी तैयारी उन इलाकों में कितनी है? चूँकि एक्सरसाइज का क्लिप हमें आ चुका है। और डिप्टी PM से सवाल है, हमारा जो डिप्लोमेटिक स्टाफ न्यू दिल्ली से आ रहा था उनके साथ वाघा बॉर्डर के ऊपर बहुत बदसलूकी की जा रही है। एक नोट भी हमें फॉरेन ऑफिस के ग्रुप में इस हवाले से मिला। तो ये बताइए, ये भी इंटरनेशनल लॉ वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है जो डिप्लोमेटिक स्टाफ आ रहा है। हमने उनके स्टाफ को बड़े एहतराम से भिजवाया लेकिन हमारे स्टाफ के साथ बदसलूकी की जा रही है। तो बस ये 2 सवाल हैं। बहुत शुक्रिया। क्या कर रही है ये, मैंने जो स्पोक्स पर्सन है उनको क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, इसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रही मिनिस्ट्री। मेरा ख्याल 3 हो गया, फिर आप नया सवाल कर लें। जहाँ तक 24 से 36 घंटे का सवाल है, ये इट वाज बेस्ड ऑन क्रेडिबल इंटेल इंफॉर्मेशन, सो वी थॉट दैट इट वुड बी अप्रोप्रिएट लेट नाइट इट शुड मेड पब्लिक एंड दैट्स व्हाई द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर गेव द स्टेटमेंट. It was in the knowledge of the entire leadership, both civil and military. Number 2, बदसलूकी जहाँ तक आपने फरमाया, obviously this is very undiplomatic, unwarranted, unacceptable. So we will raise it at all proper forums, including the United Nations, because this is not on. Because we believe
that, respect dignity of the diplomats, no matter in which country they belong to and where they're moving to and from, we will take care of that. जहाँ तक पाकिस्तान के पंचों के ताल्लुक है, our High Commission in New Delhi is working on that, and we will coordinate. You see, it's something which the data is being collected, but obviously, since there were 48 hours for them to leave and for us to leave, because both actions were taken. So I think we are taking care of this thing. The spokesperson will give you next regular briefing with the more detail. Exactly. आपने एक एक्सरसाइज का रेफर किया. दिस इज जस्ट वन पार्ट दैट वाज शेयर्ड विद यू. रेस्ट अश्योर्ड कि आपकी चाहे फौज है, चाहे फजाइया है, चाहे नेवी है, चाहे बाकी तमाम दिफा से ताल्लुक रखने वाले इदारे हैं, वो हमा वक्त हर वक्त अपनी तैयारी में मसरूफ़ है. सो वी आर एवरीवेयर all the time. We are ready and we are prepared to take on all sort of challenges. Military confrontation का रास्ता अगर उन्होंने चुनना है तो ये उनकी चॉइस है. आगे ये किधर जाता है ये फिर हमारी चॉइस है. जी, मेरा नाम एजाज अहमद है, मैं DNN से हूँ. डॉक्टर साहब, एक तो आपसे सवाल है और जनरल साहब आपसे सवाल है. जनरल साहब से पहले पूछ लेते हैं कि एक तो ये जो एक्सरसाइज का मतीन ने तस्करा किया, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे वीडियोज भी आ जाती हैं कि ये हो गया, वो हो गया, इतनी मोर्चे गिरा दिए, इतने जहाज़ गिरा दिए. हमें थोड़ा सा स्पेसिफिक इस हवाले से भी आप बता सकें कि एक्चुअली लाइन ऑफ कंट्रोल पर और वर्किंग बाउंड्री पर क्या सूरत हाल है. फिर इंडियन मीडिया बहुत बुलंद बांग दावे करता है कि हमारे पास रफ़ाइल आ गए हैं, पाकिस्तान के पास इसका तोड़ नहीं है. तो हमारे पास तोड़ क्या है उसका. और डॉक्टर साहब, आपसे सवाल ये है कि आज ही अमेरिकी तर्जुमान ने ये कहा है कि मार्को रूबियो जो है US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो आपसे और इंडियन काउंटर पार्ट से बात करेंगे. इंडिया ने एक ये मजाक बनाया हुआ है कि हर कुछ साल के बाद वो एक फॉल्स फ्लैग करता है और फिर पाकिस्तान पर शुरू कर देता है. हमारी कंडीशंस क्या होंगी और क्या मीडिएशन पॉसिबल है मौजूदा सूरत हाल में? नहीं, जरा ऑलरेडी उनके 4 सवाल हैं एक ही में, सो मेरा पहले हैंडल कर रहे थे. अभी करते हैं, अभी आपके पास. विल कम टू यू. अगर आप कमेंट करें, इज देयर एनी अपडेट ऑन द करंट सिचुएशन? देखिए, वी हैव ए नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स रिक्वेस्ट हमने भी भेजी हुई हैं. हमारे पास भी वी आर मैनेजिंग इट एज पर मैक्सिमम पोटेंशियल. लेकिन ये जो आपने सेक्रेटरी रूबियो की बात की, उन्होंने चूँकि मेरा शायद एक ट्रैवल था जो मैंने पोस्टपोन किया, यू ऑल नो, काबुल के बाद मैंने ढाका जाना था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट मुझे भी भेजी हुई है और गालबन प्राइम मिनिस्टर हाउस भी आई है. तो whosoever is available will talk to him and he calls. Obviously Foreign Office as per the standard practice will tie up the time. जहाँ तक फॉल्स फ्लैग है, हमने तो इसको अपनी इवन पहलगाम पे सीरियस रिजर्वेशन फ्लैग कर दी है. पहले आपने सब कुछ देखा है जो जनरल शरीफ ने आपको दिखाया है. दिस एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर दैट वी डू नॉट बिलीव कि ये है, लेकिन इसके बावजूद वी हैव ऑफर्ड, ओके फाइन, इफ हुआ है, यू से दैट इट्स हुआ है, तो प्लीज give the evidence to the neutral independent investigators. What is the problem about not having a probe? So अगर probe होगी तो only then we would know कि where do we stand. तो ये false flag जो है, ये एक इनका ड्रामेटिक किस्म का ये इनका प्लान है. पुलवामा देख ले, मैंने भी आपको मेडिलन ऑलब्राइट की किताब प्रेसिडेंट क्लिंटन के विजिट का बताया. I was present 2nd of December 1998 when after the detonation in Oval Office with Prime Minister Nawaz Sharif. And we have dialogue, Madeleine Albright, Sandy Berger, Rubin Talbot, they were all there. I, Sartaj Aziz Saab, apna Mushahid Hussain Sayyid, Shawaz Sharif Saab and Riaz Khokar were there. So you see, but these are the things one cannot divulge. These are national history and archives, and they are where it should be. So let me assure you, we know that there is false flag and how it is to be dealt with. So we have raised our reservations, offered independently. So I think gradually the international community, the way they drummed up false propaganda in the first 48 hours,
has died down already. You have seen that the Indians khud wo saying many things. So this is how, you know, the narrative has virtually gone for the six, and their you know, propaganda has fallen. So हम अभी भी हमारी जो ऑफर है वो है, यहाँ तक आपने ममालिक की जिक्र किया, मीडिएशन की बात की. देखिए मीडिएशन नहीं, इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, मीडिएशन तो कोई जरूरत नहीं है. So you know, our friends have offered, and they must be trying. The need of the hour is, because both countries being nuclear, need of the hour is any escalatory move can, you know, go to a direction which would be unsustainable, not between the two countries, maybe for the entire region. So it is a combined responsibility of friends and regional actors to make sure that India doesn't make this mistake. But as General Sharif has said, on behalf of armed forces, they are alert, they are ready, and they are, inshallah, in a position to give a befitting response of the nature, and we will choose time and mode, you know, of our liking. Thank you. I'll just add to that आपने कहा information आती है कि जहाज ये हो गया, मुख्तलिफ तरह information. अगर तो आप अपनी information social media से ले रहे हैं तो आपको बहुत तरह की information मिलेगी. So I would request that please only refer to the credible sources of information. Especially ये जो circumstances चल रहे हैं इसके अंदर, the social media, the accounts, they are not a credible source of information. वहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा. अपने दावे की बात की, वो दावा कहते हैं कि ये हमारा राफेल और ये वो, तो उनके दावे तो पैगाम पे भी हैं, उनके दावे तो बहुत सी चीज़ों पे हैं. उनके अगर हम उनके दावों पे चलना शुरू हो जाएं तो then the world will look entirely different. And lastly, जो आपने DGMO की टॉक की बात की, there is a long standing arrangement of routine होती है, DGMO एक hotline established है, और वो हर ट्यूसडे को उसके ऊपर एक बातचीत होती है. इसके अंदर जो सा है, दोनों साइड्स की प्रोटोकॉल यही है कि वो इस बातचीत को, इस कॉन्टैक्ट को पब्लिक नहीं करते. वी डोंट नो दैट फॉर व्हाट रीज़न द इंडियंस थॉट इट्स नेसेसरी कि उन्होंने आके इसको पब्लिक करना है. परहैप्स दे फेल्ट, जिस तरह उन्होंने कहा कि इन द नैरेटिव, इन द इंफॉर्मेशन डोमेन दे हैव नथिंग टू टेल, तो दे थॉट इट्स कि जी इसको अपनी पब्लिक को बताया जाएगा, हमने वहाँ पे सीज़फायर वायलेशंस की बात की है और हमने ये बात की है. So this is not something that is talked in public. So this is an arrangement, long-standing, between the two countries. जी, सदीक साजिद जी, एक न्यूज़ से. डॉक्टर साहब, अभी आपने हाल ही में काबुल का विजिट किया और उसके फौरी बाद ये 71 जो डीजी साहब ने बताया कि टेररिस्ट अफगानिस्तान से पाकिस्तान दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, प्रॉक्सीज़ की बात की, तो क्या आपकी उनके साथ इस हवाले से जो बात हुई उसका नतीजा इस सूरत में निकला कि शुरू में क्या कहा आपने? काबुल विजिट किया. जी 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 वो तो फिर वही जारी, बल्कि सबसे बड़ी तश्कील जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन पे आई. दूसरा डीजी साहब, आपसे एक सवाल है कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मुसलसल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग, और उनका इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी फ़ौज को ग्रीन सिग्नल दे दिया है पाकिस्तान के ऊपर हमले का, और ये कहा गया कि वो अपनी मर्ज़ी से जगह का तयन कर लें, मकाम का तयन कर लें, टारगेट का तयन कर लें. हमारी तरफ से जो आपका इसका रिस्पॉन्स क्या होगा? मैं काबुल का जवाब आपको पहले दे देता हूँ. देखिए, डोंट मिक्स टू थिंग्स टुगेदर. यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स एंड यू हैव टू डील विद देम. दिस इज़ नो सोल्यूशन कि अगर हमें पता है कि उनकी सरजमीन माजी में इस्तेमाल हुई है तो हम अपने ताल्लुकात को बंद कर दें. इट इज़ नॉट नाइदर गुड फॉर इकोनॉमी, नॉट ट्रेड, नॉर इवन इस्लामिकली इट्स नॉट अलाउड. So the government and the stakeholder decided that we should re-engage Afghanistan. So I visited Afghanistan. The visit was absolutely marvelous, both from political point of view, from economic and trade point of view, from refugees point of view. And also, वो नहीं करते, चौई साहब जनरली प्रेस टेक आउट नहीं करते, वो प्रेस रिलीज नहीं होती. इट इज़ अनयूजुअल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी अरेंजमेंट कि उन्होंने मेरे साथ खड़े होके, हमारे काउंटर पार्ट ने, वी शुड अप्रिशिएट. बजाय ये कि अगर हम ऐसी चीज़ों पे क्रिटिकल होंगे तो जो उसका पॉजिटिविटी है
वो इंडिया तो भेजेगा उनको, देखे आपने तो बड़ा, प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी मीटिंग हुई, मुझे बताया गया वो बहुत थोड़ी मीटिंग करते हैं, इट वाज एलेबोरेट मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर खुद। उसके बाद डीपीएम से मीटिंग हुई, उनकी पूरी कैबिनेट के जितने मेन विंग्स थे वो सारे थे, और फिर मुत्तकी साहब, मैं तो उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। हमें देखिए, हमने रहना है एक दूसरे के साथ, और हमारी जो बेहतरी है उनके लिए बेहतरी है, उनकी जो बेहतरी हमारे लिए बेहतरी है। सो गवर्नमेंट एंड द स्टेक होल्डर्स दे डिसाइडेड कि वी शुड री एंगेज, और उसके नतीजे में मैं गया, और द विजिट वॉज एब्सोल्युटली फाइन। और मैंने यहाँ आके आपको नहीं बताया कि वहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे बाएं हाथ मुत्तकी साहब पड़े थे, और मैं हर चीज़ जो कुछ हमने अनाउंस किया, जो कुछ एग्री किया, मैंने ट्रांसपेरेंटली कौम को और दुनिया को बता दिया, और उन्होंने भी उसको उसी पैराए में लिया, उसी तरह रिस्पॉन्ड किया। तो पहले अगर हम काबल को इसमें ड्रैग इन करेंगे, आई थिंक इट विल नॉट बी फेयर, सो इट इज़ नॉट इन नेशनल इंटरेस्ट। देखिए, आप वी आर नॉट कंसर्न कि वो क्या कह रहे हैं, वो उनकी अपनी कंजम्पशन के लिए जो कह रहे हैं। हम आपको बार बार ये बता रहे हैं, हम पहले भी कम्युनिकेट, आजमाना नहीं। 2019 में भी हमने ये बताया था कि वी आर रेडी, वी आर नॉट द वन हु आर गोइंग टू इनिशिएट एनी एग्रेशन, वी आर ए वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेट एंड विल ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ रीजन एंड कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट। बट इफ दे थिंक that aggression is the path forward, so our message is only this: we are ready, don't test it. Thank you, sir. Jiang Chao, Xinhua News Agency. We have seen that in the past days, Deputy Prime Minister and the Foreign Minister held a phone call with Chinese Foreign Minister Wang Yi. And according to a release from Chinese Foreign Ministry, China reaffirmed its support to Pakistan on counterterrorism and safeguarding its national interests and national authority and territory, and also support to carry out investigation on the incident in Pahalgam in a fair and an objective way. So my question first to DGISPR, that one thing when in your presentation about the Chinese national who are being attacked on October the 6th, 2024, that a account on social media to show indicating that this account knows the attack ahead of the thing happen. So have you ever traced the background of this account, who are behind it? And are you planning to present these evidence after the investigation to your Chinese counterparts? This is my first question to DGISPR. So second question, that we have already seen yesterday that the Indian authority has, especially its leadership, has released a lot of signal on solving the issue by forces. Well, we have seen Pakistan has carried out a lot of intensive diplomatic activity with neighboring countries and major countries in the past days. Has Pakistan have planned to propose a resolution or propose a case in the UNDC to seeking for pass a resolution to limit both sides or India side to carry out the war to solve the issue? This is my second question to Deputy Prime Minister. Thank you. Well, I had detailed telephone call, long telephone call with His Excellency, the Chinese Foreign Minister, on Sunday afternoon. He was traveling, he was at that time, I sent him a message, he was in Central Asian states traveling to Brazil for BRICS meeting. We were very clear, and I am grateful that he supported. I explained to him. He was obviously up to date. So he supported our stance and offer of the independent investigation. He says a very good offer, and he emphasized that it should be accepted and an independent investigation should take place. The second, advice, as we are ironclad friends and brothers,
was that, we must try and exercise restraint in the interest of the regional peace and security. So I assured him that, as I have told even in the Senate of Pakistan, I have also said it publicly, we will not be the first one to take any escalating move. But he fully agreed. So, his advice was that we should avoid, any escalating move and exercise restraint, which we have the policy by the civil and military leadership have already decided that we will not do the first move. So rest, I have already clarified. Your question about, the Pakistan plan resolution in the UN Security Council, we will consult. As you know that right now we are moving, diplomatic way. Obviously, I have to cancel my visit to Dhaka under the circumstances, which is scheduled for 28th, 29th. So we are taking care of everything. So if the leadership would decide for moving a resolution, we will look into that. The resolutions in UN Security Council sometime get shooted down by the P5. They have the veto power. So we are one of the 10 non-permanent elected members. So there's a different debate. We can discuss sometime the reforms in the UN Security Council, the multilateral system, which is weakening very rapidly. So it's not the time. But we will obviously, through consultative measures, because we don't want to, present a resolution and it just doesn't get through. Because you have just seen the press statement filed by US, United Joint States of America. It took 2 days because we had serious reservations on 2 points, and we got it fixed. We got Jammu and Kashmir included. We got TRF, removed. And after that, it was interesting that within the next 48 hours, TRF actually disclaimed that we have nothing to do with this thing. So thanks God, our argument has been proven, and a position what we took stands vindicated. Thank you. On the question of the X account, first I would like to say that it is a great tragedy, the loss of the valuable lives of our Chinese friends who were victim of externally sponsored and abetted terrorism. As you saw that, as you highlighted the X account that you referred, a forensic of that account tells a lot about that, from where it's being operated, which agencies. So it has clear linkage with India. As I highlighted, that it was activity on Pahalgam incident, amongst the first one to come and start pointing fingers from these accounts on Pakistan, on Islamist terrorism. Beforehand, claims on Mianwali airbase attack. Beforehand, claims of an attack that something is going to happen in Karachi. Immediate reporting of that unfortunate incident. And then amongst the first one to say, while we were not sure that who these foreigners were, that the Chinese were victim of that incident. So the forensics is there for all to say. Of course, Pakistan and China share a very organized and institutionalized method of information sharing in the domains of these investigations. So all the relevant information, investigations are shared with the friends. जी सर, मैं सैयद ज़फ़र हुसैन मेरा नाम है सर, दुनिया न्यूज़ से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा सवाल जनाब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से है। सर, आप पॉलिटिशियन हैं, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी हो जाए। सर, गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते से सारी सिचुएशन चल रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं? वो कहीं हमें फ्रंट पे नज़र नहीं आ रहे। वो कौम के लीडर हैं, वज़ीर आज़म हैं, क्या उन्हें नहीं चाहिए कि वो फ्रंट पे आके फ्रंट से कौम को लीड करें, कौम को इत्मीनान मिलें और कोई कौम से खिताब कर लें?
बताया जाए कि क्या हो रहा है, क्या हुकूमत करना चाह रही है सारी सिचुएशन को डील करने के लिए। एक मुल्क से ये जंग का मामला है, कोई छोटा इशू नहीं है। फिर आपने ये कहा कि करारदाद सेनेट ने पास कर ली है, ये कौम की आवाज़ है। मैं पूछना चाहूँगा क्या 15-20 सेनेटर्स की मौजूदगी में करारदाद की मंजूरी को कौम की आवाज़ करार दिया जा सकता है? आपका मुंतखब ऐवान के तमाम सियासी जमातों को बुलाकर इस मामले पर उन्हें इत्मीनान में क्यों नहीं किया जाता? कौम के अंदर एक जज्बा पैदा करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? ये क्यों नहीं बताया जाता कि कौम इस मसले पर Political statement well taken. Let me answer. देखें भाई, जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक है, आई फेल टू अंडरस्टैंड, या तो शायद आपको मौका नहीं मिला। स्टार्टिंग फ्रॉम राइट आफ्टर अराइवल फ्रॉम Ankara in Islamabad, 23rd evening, we have been in touch throughout, and very next morning, National Security Committee of Pakistan meets. His statement after that, the National Security Committee's press release, and after that series of interactions by Prime Minister. I'm amazed कि आपको ये भी नहीं पता, तो बड़ा हैरानगी की बात है। या तो आपको मौका नहीं मिला या आप कहीं और इंडियन चैनल्स ही देखते रहे हैं इस दौरान। दूसरा जो तो इसलिए गायब को तो he is leading from the front. I mean, frankly, we are all the military and the civil leadership under his chairmanship has been working day and night. And आपने देखा कि हम लगे हुए हैं, and I think we try from Mufa to keep giving a little piece of information about each movement we do. दूसरी जो आपने फरमाया कि 15-20 महले, अगेन मैं चूँकि अकाउंटेंट हूँ, आप शायद नॉन अकाउंटेंट हैं, ये 15-20 तो मुझे नजर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद थी। कम से कम तमाम पार्टीज़ के तमाम जो पार्लिमानी लीडर्स हैं, इफ़ यू रिकॉल, अगर आप मौजूद थे, तो हमारी 2 घंटे मीटिंग हुई। हमने 24 की रात को ही एक ड्राफ्ट, तो इसे स्टैंडर्ड ये प्रैक्टिस है कि ये फॉरेन ऑफिस का काम होता है, हमने एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बना के वो 11 बजे रात को दे दी। मैं अब चूँकि आपने सवाल किया तो मैं इसकी तफसील शेयर कर रहा हूँ, तमाम को दे दी। अगले दिन सेनेट इजलास से 1 घंटा पहले मीटिंग हुई हमारी, और मैं खुद उसमें हाजिर हूँ, और उसमें हमने खुले दिल के साथ जो किसी ने वैल्यू एडिशन प्रपोज की, वी टुक इट। और आपने देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, यू नेम जो उधर नहीं थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वर, और कहाँ बैठे, लीडर ऑफ द अपोजिशन के कमरे जहाँ मैं कभी होता था, अभी मैं लीडर ऑफ द हाउस में बैठता हूँ, तो हम वहाँ बैठे जहाँ शिबली फराज साहब का ऑफिशियल चैम्बर है। तमाम ये कोई ईगो का मसला नहीं है, ये मुल्क का मसला है, ये एक नेशनल इशू थी। मैं बड़ी खुशी के साथ मैं जब पहुंचा तो उन्होंने कहा जी कि वो लीडर दी ऑपोजिशन के कमरे बैठे हैं, उनको बुलाएं। मैं कहा नहीं, मैं उधर जाऊंगा। हम सब बैठे खुल के 2 घंटे, अगर आपको याद हो तो इजलास लेट शुरू हुआ। सो विद द कंसेंसस ऑफ दी ऑल पार्टीज, तो ये ना प्लीज कहें दिस विल बी ए वेरी अनफेयर स्टेटमेंट कि जी 15-20 सेनेटर्स के मौजूदगी में अगर रेजोल्यूशन पास हो गई। आई वॉक देम थ्रू पूरी जो उस वक्त तक की कार्रवाई थी, सबको हाउस में जब मैंने रेजोल्यूशन पास की, एक तरफ मेरे दस्तखत है, दूसरी तरफ लीडर ऑफ द अपोजिशन का दस्तखत है उस रेजोल्यूशन के ऊपर। यू कैन गो एंड गेट द कॉपी। और उसके बाद कल 2-3 दिन डिबेट हुई। कल जब डिबेट को मैंने कंक्लूड किया, फ्रॉम दैट पॉइंट टिल यस्टरडे इवनिंग, जब वो प्रोरोग हुआ उससे पहले, मैंने जो मजीद जो डेवलपमेंट्स हैं इस मामले के हवाले से, आई जस्ट अगेन शेयर्ड एंड आई टोल्ड देम कि जब भी इजलास दोबारा आएगा मैं आपको बाकी भी मजीद जो कहा हो, तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा और क्या ट्रांसपेरेंसी हो सकती है भाई। और सेनेट बिल्कुल ही कौम कटी है। अब हम ऐसे मैसेजेस ना दें। देखिए, इंटरनल पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं और वो होते हैं, इट इज़ आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स टू डील विद द डिफरेंसेस, और डील करते रहे को मैं तो पहली दफ़ा नहीं कर रहा, मैं पिछले 35 साल से यही झक मार रहा हूँ। तो आई विल कंटिन्यू टू डू दैट प्लीज़। इसहाक डार और DGISPR गुफ्तगू कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम और इदारे एक साथ हैं। दहशतगर्दी के हर वाक़े पर इल्ज़ाम तराशी भारत का वतीरा है। भारतीय हुकूमत की तरफ से मज़मूम सियासी मकासद के लिए ऐसे वाक़यात का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय क़यादत अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करती है। मकबूजा कश्मीर के अवाम के हुकूक को कुचलने के लिए भारत